Hello everyone. Now we are going to start calculation of yield measure for bond with an embedded option. हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जब बॉन्ड इंडेंचर के अंदर कुछ लीगल क्लॉजेस डाले हैं रिलेटेड टू कॉन्टिजेंसी प्रोविजंस, जो कोई इवेंट होने पे वो कॉन्टिजेंसी प्रोविजन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं टू द होल्डर ऑफ दैट ऑप्शन. ऐसे हमने पहले डिस्कस किए थे और ऐसे कॉन्टिजेंसी प्रोविजंस को हमने कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, कन्वर्टेबल ऑप्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया था. तो हम आज बात कर रहे हैं ऐसे बॉन्ड के यील्ड का कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं जिस बॉन्ड के साथ में हमारा पहला एम्बेडेड ऑप्शन था. एम्बेडेड मींस विच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम दैट बॉन्ड, वो बॉन्ड के साथ ही एज अ सिंगल सिक्योरिटी ट्रेड होगा, एंड दैट वाज कॉल ऑप्शन. व्हाट वाज द कॉल ऑप्शन हमने डिस्कस किया था डिटेल में. कॉल ऑप्शन इज अवेलेबल विद द इशूअर ऑफ द बॉन्ड. इशूअर के पास ये ऑप्शन है कि ही कैन कॉल बैक बॉन्ड फॉर एन अर्ली रिडम्पशन. कब करेगा ये भी हमने डिस्कस किया था. अगर उसको एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में यील्ड शायद मार्केट में गिर जाएगी, या उसको लगता है कि फ्यूचर में बिफोर मैच्योरिटी ही इज गोइंग टू जनरेट सम लिक्विडिटी, सो रेदर देन पेइंग इंटरेस्ट कॉस्ट आफ्टर दैट ही विल गो फॉर अर्ली रिडम्पशन, तो ऐसे केस में वो कॉल ऑप्शन रखता है बॉन्ड के अंदर. सो इट इज एन एक्स्ट्रा एडवांटेज टू इशूअर एंड ए डिसएडवांटेज टू इन्वेस्टर. सो इन्वेस्टर इसके कारण थोड़ी हायर यील्ड एक्सपेक्ट करता है ऐसे बॉन्ड से, बिकॉज ही इज फेसिंग एडिशनल रिस्क, अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी क्या कि एडिशनल रिस्क रिलेटेड टू री इन्वेस्टमेंट, दैट कि अगर इशूअर ने कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया तो उसके पास जो अर्ली रिडम्पशन आएगा वो उसका क्या करेगा, वो कैसे री इन्वेस्ट करेगा, वेदर ही विल बी एबल टू गेट फर्दर अपॉर्चुनिटीज फॉर री इन्वेस्टमेंट और नॉट एट सेम यील्ड. एंड सेकेंड, एक और अनसर्टेनिटी है कि एक और डिसएडवांटेज है कि कॉलेबल बॉन्ड का प्राइस एप्रिसिएशन लिमिटेड होता है. कॉल प्राइस बिकम द कैप प्राइस, बिकॉज कॉल प्राइस से ऊपर अगर मार्केट में बॉन्ड प्राइस ट्रेड करेगा, इशूअर उस बॉन्ड को कॉल बैक कर लेगा. सो कभी भी कोई इन्वेस्टर, न्यू इन्वेस्टर उस बॉन्ड के लिए हमेशा एक रिस्क रहेगा कि अगर इशूअर ने कॉल बैक किया तो उसको उस कॉल प्राइस से हायर प्राइस ही नहीं मिलेगी, तो कोई भी इन्वेस्टर उस बॉन्ड को कॉल प्राइस से ऊपर परचेज ही नहीं करेगा. सो देयर इज ऑलवेज अ लिमिटेशन ऑन दी अपसाइड price appreciation. So combinedly these limited price appreciation and reinvestment risk is called as call risk. और call risk के लिए ही investor additional yield requirement रखता है, desired yield को एक normal non option free bond के comparison में higher charge करता है, जिसके कारण call bonds with embedded call option की prices yield higher है तो prices lower होगी, negative relationship. सो हमने इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. व्हाट इज कॉल रिस्क? कॉल रिस्क इज दिस अनसर्टेनिटी अबाउट मैच्योरिटी मनी एंड द लिमिटेड प्राइस एप्रिसिएशन. व्हाट इज कॉल प्रोटेक्शन पीरियड? द पीरियड ड्यूरिंग विच कॉल ऑप्शन इज नॉट अलाउड टू बी एक्सरसाइज्ड. कॉल पीरियड, द पीरियड ड्यूरिंग विच issuer can exercise the option, and the call price is the price at which issuer will be redeeming the bond by exercising the call option. Now question comes is कि अगर ये एक फिक्स रेट बॉन्ड है और इसके अंदर 2-3 जगह कॉल ऑप्शन का प्रोविजन है बिफोर मैच्योरिटी ऑफ कोर्स एट डिफरेंट कॉल प्राइसेस, तो ऐसे बॉन्ड की हम यील्ड क्या मानते हैं? बिकॉज अब टेन्योर अलग अलग हो जाएगा, एंड एट स्टार्ट ऑफ द और इशू ऑफ द बॉन्ड हमें एग्जैक्ट टेन्योर क्या होगा, कब बॉन्ड रिडीम होगा बाय एक्सरसाइजिंग द कॉल ऑप्शन, एंड एट व्हाट प्लेस, और ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा एंड बॉन्ड विल कंटिन्यू टिल इट्स डिसाइडेड टर्म टू मैच्योरिटी, तो वो एक इशू हो गया हमारे लिए, मैथमेटिकल इशू हो गया कि कितने टाइम तक हम कंसिडर करें कैश फ्लो. तो इसका एक फिक्स रेट बॉन्ड विद कॉल ऑप्शन के यील्ड को कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 मेथड है. देखें क्या मेथड है ये. फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्टरनेट वन says that calculate YTC for each call date. Now what is YTC? It is yield to call, as well as YTM for the maturity date. And जो maturity date का एक normal option free bond का YTM है वो भी calculate करिए. And जो ये callable bond है, ये bond with fixed rate bond with call option है जिसको हम callable bond बोल रहे हैं,
इसकी yield, final yield will be the lowest of all these YTC and YTM what we have calculated, that is yield to worst. Yield to worst. Lowest of all the YTC and YT. Next is alternate to calculate price of call option using option valuation model. कुछ स्पेशलाइज जो मॉडल जैसे हम डेरिवेटिव में करेंगे ब्लैक एंड स्कूल, वैसे किसी मॉडल से इस कॉल प्राइस को जो इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी है उसके अकॉर्डिंग कंसिडर करते हुए सेपरेटली कैलकुलेट वैल्यू ऑफ दिस कॉल ऑप्शन जो उस बॉन्ड के अंदर एम्बेडेड है. स्टेप 2, बॉन्ड की फ्लैट प्राइस में से उस कॉल ऑप्शन की वैल्यू को एडजस्ट करिए, और एडजस्टमेंट या नेगेटिव होगा बिकॉज कॉल ऑप्शन प्रोविजन होने के कारण इन्वेस्टर विल बी पेइंग लेस अमाउंट. सो योर ऑप्शन प्राइस, ऑप्शन एडजस्टेड प्राइस ऑफ बॉन्ड विल बी फ्लैट प्राइस माइनस द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन डिराइव फ्रॉम दैट स्पेशलाइज्ड मॉडल, ऑप्शन वैल्यूएशन मॉडल. एंड देन इस ऑप्शन एडजस्टेड बॉन्ड प्राइस को आप क्या करिए, यूज करिए फॉर कैलकुलेशन ऑफ YTM. दैट विल बी योर yield of this YTM of this callable bond. So use this option adjusted price to calculate option adjusted yield. So option adjusted yield कैलकुलेट करने के दो मेथड है. ऑफ कोर्स सेकेंड मेथड हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमारे कोर्स में ऑप्शन का ऑप्शन वैल्यूएशन मॉडल यूज करके कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकालना नहीं है. तो वी विल गो विद द फर्स्ट अल्टरनेटिव. लेट्स गो फॉर वन इलस्ट्रेशन. लेट्स गो फॉर वन इलस्ट्रेशन. ऑप्शन, कॉल ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड कैलकुलेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं. नाउ लेट्स से इट्स अ 5-year 10% सेमी एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड. कूपन पेइंग बॉन्ड with face value, par value of $1 lakh, and or let's go for 100 only, very simple, and trading at let's say 95 with call option. What are the call option? After 2 year till 3 year start, 3rd year start, or 3rd year, sorry, not 3rd year start, after 2 year it's the 3rd year of, during 3rd year we'll say better, it's after 2 year completion, call price 105, after 3 year completion, call price 102, after 4 year completion, at the end of 4th year, call price is 101. So in this case we will be calculating one YTM and second YTC at different call dates. So if I make a time series, it's a T0 to how many, 10 years. So it's a T10, 10 semi-annual bonds. It's a semi-annual time series, so there will be semi-annual time series. So T1 we will get a coupon of on 100, it is 5 rupees. T2 we are going to get 5 rupees, and this is your PV, that is negative 95. T3 5 rupees, T4 5 rupees, and now we have one first call which can be exercised at 105.
On T6 there can be another call, second call, which can be exercised at 102. T8 third call can be exercised with a price of 101, and here it is maturity of rupees 100. So we will assume that this bond is actually 4 different type of bonds. So let's calculate first YTM cal, yield to maturity. YTM, yield to maturity, assuming the bond will be held till maturity, yield to maturity. So N is 10, PV is 95, FV is 100, and N we have already done, so PMT is 5. So YTM is equals to 10, 95 negative, 5 positive, 100 positive, and we got yield of 5.6687. So annualized YTM, is equals to 5.6687 multiplied by 2 is equals to 11.3374% per annum. Next, we will calculate yield to first call. In this case, N will be equals to 4. Only at the end of second year there will be 4 semi-annuals. So PV minus 95, FV 100, and PMT is equals to 5, not 100. At the end of second year, bond can be called at 105. So we will put 105. So now compute IY. We have got let's see the data, let's put the data: 95 negative, 5 positive, 105 positive, and then 4 is the time, and yield to first call for semi-annual for per half year it is going to be 7.6126. so annualized yield will be equals to, yield to first call will be equals to 15.2252% per annum. Next, yield to second call. Now second call will be at the end of third year. So it is your N equals to 6, PV equals to 95, FV equals to, it can be called at 102, bond can be called at 102, and PMT is equals to 5. Let's see, compute IY. So we have 95, 5 PMT, 100 future value, 95 negative, and 6 as the time. Compute IY, we got 6.0174. So annualized yield to second call is equals to, multiplied by 2 equals to 12.0347% per annum. Let's go for yield to third call. Yield to third call will be, N will be 8 now, present value again 95, future value is equals to 100, and this time you can call, issuer can call at 101, and PMT is equals to 5. So let's compute IY equals to, so N 8 this time, 95 negative,
5 and 101. Let me check first this, let's complete this. 5.9035. So annualized yield to third call is equals to, multiplied by 2 is equals to 11.807% per annum. So, and let me check this one also. 102, 595 negative, and this was 6 periods. This is wrong. So why? Because we have taken 100 in place of 102. We should have taken 6.3113 multiplied by 2 gives you 12.6225. So now we have all the numbers with us. Let's check this one also. 105, future value 595 negative, and 4, 7.62 multiplied by 2, we have got this correct. So now we have YTM equals to 11.3374. We have YTC first call as 15.2252. We have second call YTC, it is 12.6225, and we have third call YTC, which is 11.807%. So what yield, option adjusted yield, what will be the option adjusted yield? So option adjusted yield will be, option adjusted yield will be the lowest of all these. Lowest of all these is 11.3374%. Why it is lowest of all these numbers? Because investor will assume that investor will be taking his decision based on the conservative approach. He will assume that he is going to get the lowest yield out of this bond, and that is the yield he should be considering as his rate of return. So that is why we consider lowest of all these numbers, because if company redeems bond at first call, effectively company is paying a return of 15.22%, whereas at second call the effective returns will be 12.62% per annum. Third year it will be 11.80. Third call it will give a return of 11.80, and if company continue bond till its maturity, the return generated by investor will be 11.33%. So if I have to take a decision from the conservative standpoint of view as an investor, I will always consider that I will get the lowest returns, because call option, exercising call option is not in investor's control, it is in the control of issuer. That is why yield to option adjusted yield is the worst of all the YTC and YTM. So I hope everyone understood this. Thank you so much.